गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायाम् अथ त्रयोदशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। शृणु ब्रह्मसुतभृत्या चरितं शशिमौलिना सौवर्तिनो यथा भृत्या विश्वानरगृहे शिवा नामना गृहपति सोऽभूद्गिन्लोकपतिर्मुने अग्निरूपस्तेजसः सर्वात्मा परमप्रभु नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे धर्मपुरे। पुरे धर्मपुरे पुरा पुरारी भक्त पुण्यात्मा भवदीक्षा नरो मुनि ब्रह्मचर्याश्रमे निष्ठो ब्रह्मयज्ञरता सदा शाण्डिल्य गोत्रशुचिमान् ब्रह्मतेजो निधिर्वशी विज्ञाताखिल शास्त्रार्थ सदाचारता सदा शैवाचार प्रवीणोति लौकिकाचार विद्वरा चिते विचार्य गृहिणी गुणानि वीक्षा नरा शुभान् अधुवाह विधानेन स्वोचिताङ्काल कन्यकाम् अग्निशुशूष्ण रता पञ्च यज्ञप्रायणा षट्कर्म निरतो नित्यं देवपितृतिथिप्रिय एवं बहुतिथे काले गते तस्याग्रजन्मना भार्या शुचिष्मती नाम भर्तारं प्रासुव्रता नाथ भोगा मया सर्वे भुक्ता वै त्वत्प्रसादता स्त्रीणां समुचिता ये स युस्त्वां समेत्य मुदावह एवमे प्रार्थितं नाथ चिराय हृदि संस्थितं गृहस्थानां समुचितं त्वमेतद्ध्यातुर्महसि। विश्वानर उवाच किं देयं हि सुक्षोणी तव प्रिये हितेशनि तत्प्रार्थय महाभागे प्रयच्छाम्य विलम्बितम् महेश तु प्रसादेन मम किञ्चिन् दुर्लभम् इहामुत्र च कल्याणी सर्वकल्याणकारिणा। नन्दीश्वर उवाच इत्याकर्ण्यवचापत्त पत्युस्तस्य सापति देवता उवाच हृष्यवदना करो बध्वा विनीतिका शुचिष्मत्युवाच वर्योग्यास्मि चेनाथ यदि देयो वरो मम महेशसदृशं पुत्रं देहि नान्यं वरं वृणे। नन्दीश्वर उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा ब्राह्मणा स शुचिव्रता शनं समाधिमाधाय हत्येतत् समञ्चिन्तयत् अहो किं मे तया तन्व्या प्रार्थितं हाति दुर्लभं मनोरथपथा दूर्मस्तु वासहि सर्वकृत तेनैवास्य मुखे स्थित्वा वाक्स्वरूपेण शम्भुना व्याहृतं को अन्यथा कर्तुमुत्सहेत् भवेदिदम् इति सच्चिन्तय स मुनिः विश्वानर उदारधी तथा प्रोवाच तां पत्नीमेकपत्नीव्रते स्थिता इत्थत् माक्षास्य तं पत्नी जगाम तपसे मुनि यत्र विश्वेश्वर साक्षात् काशीनाथो धितिष्ठति प्राप्य वाराणसीं तूर्न दृष्ट्वा तां मणिकर्णिकां तत्याज तापत्रयमपि जन्मशतार्जितं दृष्ट्वा सर्वाणि लिङ्गानि विश्वेश प्रमुखानि च सनातवा सर्वेषु कुण्डेषु वापि कूप्सरस्सु च नत्वा विनायकान् सर्वान् गौरीशर्मा प्रणम्य च सम्पूज्य कालराज च भैरवं पापभक्षणं दण्डनायकमुख्याक्षं गणान् स्तुत्वा प्रयत्नत आदिकेशव मुख्याक्षं केशवं परितोष च लोलार्कमुख्य सूर्याक्ष प्रणम्य स पुनः पुनः कृत्वा च पिण्डदानानि सर्वतीर्थेषु
स्वतन्त्रता सहस्रभोजनाध्यक्ष मुनीनन्वि प्राणप्रतर्प्य च महापूजोपचारैक्ष लिङ्गान्यभयर्च भक्तित अस्कृ किं लिङ्ग श्रीप्रसीद्विदमा यत्र निक्षला तामेति तपस्तन्य काम्यया क्षणं विचार्य स मुनिरिति विक्ष्वानरसुधी क्षिप्रं पुत्रप्रदं लिङ्गं वीरेशं प्रशंसः असङ्ख्यजाता सहस्राणि सिद्ध्वा सिद्धिगतास्तथा सिद्धलिङ्गमिति ख्यातं तस्मद्वीरेक्षरं परं वीरेक्षरं महालिङ्गम् अब्दमभयर्च भक्तिता आयुर्मनोरथं सर्वं पुत्रादिकं वनेक्षन् अहं यत्र वीरेशं समाराध्य त्रिकालता अशुपुत्रं वाप्यस्यामि यथाभिलषितं स्त्रिया इति कृत्वा मतिं धीरो विप्रो विश्वानरकृति चन्द्रकूपजले स्नात्वा जघ्राणेऽम्रति एकाहारो भवन्मासं मासं नक्ताशनोऽभवत् अयाचिताशनो मासान् यक्ताक्षन पुनः पयोव्रतो भवन्मासं मासं शाकफलाशन मासं मुष्टितिल्लाहारो मासं पानीये भोजना पञ्चगव्याशनो मासं चान्द्रायण व्रती मासं कुशाग्र जलभुन्मासं शवसन भक्षण एव मबध्मितं कालं ततापस तपोदितं त्रिकालमर्चय दत्या वीरेशं लिङ्गमुत्तमम् अथ त्रयोदशे मासि स्नात्वा त्रिपत्गाम्भसि प्रत्यूष एव वीरेशं यावदायाति स द्विजा तावदिलोकयाचक्रे मध्ये लिङ्गं तपोधन विभूतिविभूषणं बालं षष्ठवर्षाकृतिं शिशुम् आकर्ण्यायतनेत्र च सुरक्तदर्शन नच्छदं चारुपिङ्गजटामौली नग्नं प्रहसि ताननं शैशवोचित्नेपथ्यधारिणं पठन्त श्रुतिसूक्तानि हसन्त च स्वलीलया तमालोक्य मुदं प्राप्य रोमकच्चुकितो मुनि प्रोचार हृदालापानमोऽसित्वती पुनः पुनः अभिलाषप्रदे पत्यैरष्टभिर्ला बालरूपिणं तुष्टाव परमानन्दं शम्भुविश्वानरकृति विश्वानरुवाच एकं ब्रह्मोवादित्यं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो नादित्यो अवस्तस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपदे महेशं कर्ताहर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेश वेकरूपपयुरूप यदत्प्रत्यगधर्मेकोपयनेकस्तस्मान्न्य त्वां विनेशं प्रपद्य रजो सर्पशक्तिकायां च रौप्यं नैरपुरस्तन्मृगाख्यमरीचे यदस्तदद्विष्यगेव प्रपञ्चो यस्मिज्ञाते तं प्रपदे महेशं तो ये शैत्यं दाकत्वं च वहो तापो भानो शीतभानो प्रसाद पुष्पे गन्धो दुग्धमध्यपि सपर्यत्तच्छम्भो त्वं तत्तस्सत्त्वां प्रपद्य शब्दे गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य घ्राणसत्त्वं व्यग्रग्रीरा यासि दूरात् पश्येस्त्वं रस्यज्ञोऽप्यजुह्व कस्त्वां स्म यज्ञवेत यत्सत्त्वां प्रपदे नो वेद त्वामीश साक्षादिवेदो नो विष्णुनोर्विधाताखिलस्य नो योगीन्द्र नेन्द्रमुख्याक्ष देवभक्तो वेद त्वामतस्तत्त्वां प्रपद्य नो ते गोत्रं नो सजनामापि नाशो नो वा रूपं नैव शीलं न देश इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्या सर्वान्
कामना पूरये सत्वं भजे त्वं त्वत्त सर्वे त्वं हि सर्वं स्मारये त्वं गौरीशसत्वं च नग्नोति शान्त त्वं वृद्धस्तत्त्वं युवां त्वं च बालसतत्वं यक्तिं नान्यत् सत्त्वं नतोऽहं नन्दीश्वरवाच स्तुते प्रेति विप्रो निपात भूमौ सम्भत्पाणिर्भवतीह यावता तावत्स बालो किल्वृद वृद प्रोवाच भूदेवं तीव विष्ट बालुवाच विश्वानरमुनिश्रेष्ठ भूदेवाहं त्वयाद्यव्यय तोषिता सुप्रसन्नात्मा वृणीष्वरमुत्तमं तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनि विश्वानरकृति प्रत्यब्रवीण मुनिश्रेष्ठ शङ्करं बालरूपिणम् विश्वानरुवाच महेश्वर किं ज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो सर्वान्तरात्मा भगवान् सर्वप्रदो भवान् याचञ्च प्रतिनियुक्तं मा किं ब्रूषे दैन्यकारिणि इति ज्ञात्वा महेशान् यथेच्छसि तथा कुरु नन्दीश्वरुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवो विश्वानरस्य हि शुचिशुचिव्रतस्याथ शुचिं स्मृत्वाब्रवीत् शशु त्वया शुचिष्मत्यां योऽभिलाषकृतो हृदि अचिरेणैव कालेन स भविष्यत् यत् संशयं तव पुत्रमेष्यामि शुचिष्मत्यां महामते ख्यातो गृहपतिर्नाम्ना शुचि सर्वामरप्रिय अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत् त्वयेरितम् अभद्रिकालपठनात् कामदं शिवसन्निधौ एते सत्स्तोत्रपठनं पुत्रपौत्रधनप्रदं सर्वशान्तिकर्षापि सर्वापतिविनाशनं स्वर्गापवर्गसम्पत्तिकारकं नात्र संशयः सर्वस्तोत्रसम्भोतत्सर्वकामप्रदां सदा प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिङ्गं भयच्च शाम्भवम् वर्षं जपनिदं स्तोत्रं पुत्रवान् भवेत् अभिलाषाष्टकमिदं न देयं यस्य कस्यचित् गोपनीयं प्रयत्नेन महावन्ध्यया प्रसूतिकृत स्त्रिया वा पुरेशनापि नियमालिङ्गसन्निधौ अबन्धतप्तमिदं स्तोत्रं पुत्रतं नात्र संशय नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वान्तर्धदेशं पुरबालरूपः सतां गति सोऽपि विश्वानरो विप्रो हृष्टात्मा स्वगृहं ययो इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयां शतरुद्रसहितायां गृहपत्यवतारवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।